Big Boss, Big Boss, Big Boss, Big Boss. बिग बॉस 14 का शुरू हुए अब काफी दिन हो चुके हैं और सभी कंटेस्टेंट्स के असली रूप सामने आते जा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू कि संडे को आखिर घर में हुआ क्या। एक्चुअली संडे को घर पूरा कोर्ट रूम बना हुआ था। सही सुना आपने। अगर आपने मिस किया था एपिसोड तो लेट मी टेल यू कि बिग बॉस का घर कोर्ट रूम में तब्दील हो गया था और एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स अंदर आ रहे थे कटघरे के और जवाब दे रहे थे लोगों के तड़कते भड़कते क्वेश्चंस के, जहाँ पे जिसको जो शिकवा गिला था या जो भी चीज़ें थी उन सब का जवाब दिया जा रहा था। लेकिन एज यूजुअल आपको तो पता है, अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं, कि रुबीना कितने बखूबी से सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हैं। तो भाई संडे में कोर्ट रूम का जो ये पूरा सिलसिला था, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो वही था जब रुबीना कटघरे के अंदर आई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रुबीना जब कटघरे में आई तो उन्होंने कौन से क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा अच्छे से आंसर्स दिए हैं। एक्चुअली जब रुबीना कटघरे में आई तो सबके पास उनके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर था, लेकिन कटघरे में खड़े होकर रुबीना ने एक बात तो क्लियर कट कर दी कि उनसे या फिर उनके पति अभिनव से कोई भी पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बात एजाज के क्वेश्चन पे क्लियर कट एकदम सामने बोल दी कि कोई भी इस घर में रुबीना और अभिनव से पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत फेयर गेम खेल रहे हैं। इसके बाद एजाज ने एक्चुअली उनसे एक और क्वेश्चन पूछा कि रुबीना आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या कोई डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, क्योंकि मुझे वो साफ दिखाई दे रहा है कि आप मेरे सामने खुलकर सामने नहीं आ रही हैं या फिर आपको कोई दिक्कत है मुझसे। तो इसका भी जवाब रुबीना ने एकदम ब्लंटली दे दिया। उन्होंने कहा टू बी वेरी ऑनेस्ट एजाज, सच में मैं आपके आसपास बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और ये जवाब देते ही देते मामला थोड़ा गर्मा गर्मी में भी बदल गया। और आपको तो पता है बिग बॉस 14 के घर में अगर मामला गर्मा गर्मी में बदला तो बात छोटी नहीं रहती भाई, बड़ी हो जाती है। क्योंकि एजाज ने एक बात ये बोली कि वो उनके पति अभिनव को अपना भाई मानते हैं। इस पर भी रुबीना ने उनको क्लियर कट बोल दिया कि अगर आप उसको अपना भाई मानते हैं तो पवित्रा का टॉप खींचने जैसा इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे सकते हैं। तो भाई बात तो यहाँ एकदम क्लियर है कि रुबीना और एजाज में बन नहीं रही है, और रुबीना तो क्लियर कट है कि उन्हें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और उनसे पंगा ना ही ले तो इस घर में ज़्यादा बेटर होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब कुछ और बातें करते हैं। एक्चुअली वीकेंड के वार में जो ये कोर्ट रूम में बिग बॉस का घर बदला था, वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स तो अंदर गए भाई कटघरे के और उन्होंने जवाब भी काफ़ी दिए। लेकिन एक बात आपने नोटिस की थी कि एपिसोड में कि ये जो हमारे सीनियर्स आए सिद्धार्थ, हिना एंड गौहर, ये लोग कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे थे। सारे कंटेस्टेंट जब जवाब दे रहे थे वो बैठे थे, जब उनकी आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा था और स्माइल्स पास किए जा रहे थे, मतलब इससे साफ दिख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। और समवेयर आई फेल्ट कि उनको ये भी पता था कि कौन क्या बोलने वाला है, क्योंकि भाई हैं तो सीनियर ही और बिग बॉस की सारी चालें उन्हें पता है। अब आपको मैं एक बहुत बड़ी अंदर की बात बताती हूँ, क्योंकि अंदर की बात सिर्फ INS टीवी के इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं ना वो सीधा आपको न्यूज़ अंदर से यहाँ लाकर देते हैं। एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात पता चली है जो इस बार बिग बॉस में सीनियर्स हैं ना, सिद्धार्थ, हिना एंड गौहर, वो आप सबको पता है कि कितने बड़े प्लेयर्स हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तो भाई नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से पिछले गेम्स जो खेल रखे हैं। एक्चुअली इन तीनों को बिग बॉस 14 के घर का विनर मिल चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, इन तीनों को इस बार बिग बॉस 14 के घर के अंदर का विनर किसी न किसी में दिखाई दे रहा है। कोई गेसेस हैं मैं बताऊं उससे पहले कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से कौन बन सकता है। ठीक है, तो अब तक आपने लिख तो दिया ही होगा, तो चलिए अब मैं बताती हूँ। इन तीनों को लगता है कि रुबीना में दम है इस बार विनर बनने का, क्योंकि रुबीना अपनी बातों को एकदम साफ सुथरा रखती हैं और एकदम क्लियर है, एकदम फेयरली खेल रही हैं और उनके अंदर ये टैलेंट है कि कोई भी बहस हो या कोई भी गेम हो उसको बखूबी खेलेंगी। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि वो एकदम शांत प्रिय होकर सबको समझकर अपना गेम शांति से खेल रही हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपको बताऊं तो सीनियर्स को भी और मेरे ख्याल से आप सबको भी, ऑडियंस को भी बिग बॉस 14 के घर की लेडी सिंघम मिल गई है। जी हाँ, तो बताइए इस बार की सिंघम कौन है? रुबीना हुई ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीनियर्स को लगता है। आपको भी लगता है तो डू राइट दैट इन कमेंट। आई होप यू ऑल नो दैट इस बार नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स कौन कौन से, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा देती हूँ कि इस बार रुबीना, अभिनव, शहजाद, जान और जैस्मिन, ये पांचों लोग
नॉमिनेटेड हैं और आज रात इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर निकलेगा। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता क्या है कि ये इनसाइड खबर है। जैसे पिछली बार हुआ था ना इलेक्शन में, इस बार भी सीनियर्स के हाथ में इसकी चाबी है, वो चूज़ करेंगे कि वो किसको इविक्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, ये खबर सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ कि सीनियर्स के हाथ में है ये बात कि इन पांचों में से कौन जाएगा। तो आप गेस करिए कि इन सीनियर्स का फेवरेट कौन है और जाएगा कौन। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस बार कौन जाएगा। शाम एपिसोड शुरू होने से पहले ही मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन जा रहा है भाई इस बार घर से बाहर। तो भाई कहते हैं ना, अगर सीनियर्स को लाया गया है फ्रेशर्स के सामने तो सीनियर से बना के रखनी चाहिए। तो हमने स्कूल से ही सीखा है। तो आई होप इस बार के जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने अब तक ये बात तो सीख ही ली होगी। चलिए, आज की मेरी बातों से आपने गेस तो लगा ही लिया होगा कि इस बार कौन इविक्ट होने वाला है। और आपको तो मैंने बता ही दिया है भाई, इस बार के जो राजा हैं वो सीनियर्स हैं, क्योंकि वो ही डिसाइड कर रहे हैं कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। और आपको अभी भी लगता है कि कौन जाने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर निकले। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जनवरी 2021 में बधाई 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह बधाई हो फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त है। इसमें राजकुमार दिल्ली के एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वह महिला थाने में एकमात्र पुरुष पुलिस अधिकारी रहते हैं और भूमि एक स्कूल की पीटी टीचर की भूमिका में है। इस खबर को भूमि ने राजकुमार संग अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा। राजकुमार ने भी एक तस्वीर साझा की और लिखा, बधाई 2 को बधाई हो के लेखक अक्षत घिड़ियाल और सुमन अधिकारी ने लिखा है। वहीं हर्षवर्धन कुलकर्णी बधाई 2 का निर्देशन करेंगे। cinema and the way the Indian cinema is going to be represented there at a prestigious film festival. How do you want to react to that? First of all, thank you. It's thank you for the compliment. I am very excited. This year has been such a weird year, as you were saying before. So many festivals have been cancelled. So much, we were supposed to go to Cannes, but Cannes got cancelled. So it has been a very tough year. So Busan was one of the only few festivals that is actually having a physical festival. So yes, we're very excited that not only did we get selected, but we're in the main competition. And it's a very short selection, but section. Yes. Yeah, it's a new kind. So very excited. I'm very excited. I'm very nervous and excited. Look at another street child in the same way. So what I was asking you is that what triggered you to tell the story and especially set it at a backdrop, which is otherwise it is set into the reality, but it is so cruel. It's so cruel, and I really cruel that. But what was your triggering point to set the story and the story in the manner you did in the film? Arundhati, I was 19 years old when I first came to Bombay. Okay, and I stayed in a very small PG paying guest accommodation on Ipinsi Road, and the room where I was staying was the size of a matchbox. So basically, you could just slip in and slip out, and it was so depressing to stay there that I used to always be outside. I would be so. And one of the things I realized is I used to walk a lot, and I used to see a lot of people. And even after I left India, and every time I used to come back, I used to always take the trains. I used to always walk, and I used to take a lot of pictures. So photography is something that is very integral part of my storytelling. And I, for instance, before even shooting the film, I researched the locations for 1 year. I shot every frame that you see in the film. I shot it on the camera. So I literally I have thousands and thousands and thousands of photographs of every shot that I select. So for me, that kind of a meticulous planning is something that was very important to me. And the reason why it was important to me is because it was inspired by my thousands and thousands of hours that I spent walking, looking at the city, seeing it, absorbing it. Because this is something that I've grown up with in many ways. The city has been like a very strong inspiration for me.
And it's been a very strong inspiration in terms of all the people who live in. Like many years ago, actually in 2017, when I was actually in a train station, I actually saw a little kid trying to steal something from a woman's bag outside Mahim station. So I looked at him and he saw me watching and he started running. And I kind of waved at him and I kind of like, no, don't run away. I'm not going to do anything. I just want to talk to you. In the beginning, he was very reluctant. But then I kind of talked to him. And as I started talking to him, he started telling me about the world he lived in. That there were 7 other guys like that and how they pickpocketed, how they ate, and the fact that 5 of them were actually serious drug addicts. They kind of sniffed glue. They were kind of smoking all this, and how they paid for the drugs, where the drugs. This even I saw. It was unbelievable. It was the side of the world, and I was so blown away by it. And I was just, it was staggering to me. Like this, Mumbai is like, the population of Mumbai is between 17 to 20 million. That population is almost more than most countries. And almost 50 to 60% of that population is under the age of 25. Okay, so imagine so many young people. Youngsters are here, And half of them don't have a job. So imagine, how do they make a living? What do they do? So there is so much. So that's what, for me, that was really the inspiration of where Harami came from. Where that the idea of there are, how society looks down upon these people, how it dismisses them in just word. Tu to ek harami hai, chal nikal yahan se. Because that's one of the things that I always. Bombay is such a city that it gives you amazing opportunity, but at the same time takes it away from you like that. It's a city of extremes. It's a city of a lot of promises, but a lot of broken promises. It's a city of amazing wealth and richness, and it's a city of unbelievable poverty. It's a city of unbelievable success, unbelievable failure. It's a city of, that's what makes Mumbai, and it demands so much out of everyone. And it demands the very best of you to live and function in a city. So, of all the cities I've lived everywhere in the world, Bombay or Mumbai is that city that kind of has that extremity about it. And it's a very Darwinian city. I think Bombay or Mumbai is one of the most Dickensian cities in the world. And that's really where a lot of inspiration for this. So Harami is my love letter to Mumbai. Every character in that movie has, as you said, a sun ray of insaniyat hai. Even somebody like a Sagar Bhai, who's a bad guy, but मैंने typical bad guy नहीं दिखाया, and that's the reason why I wanted to go to, somebody like Imran Hashmi, who's so not a bad guy. He's such a sweet guy. He's almost like known to be one of the best kissers in the movie, and I'm like, suddenly I'm showing this guy as this incredibly different, crazy bad guy, but he's not like one of those bad guys like from, Slumdog and guns and stuff like that. None of that is there. The power of evil comes when it's invisible. But at the same time, even a guy like Imran Hashmi's character in that film has to have some redemption. उसके लिए भी तो कुछ hope होना चाहिए. And उसका hope है ये लड़का. उसका hope है ये 55 लड़का. वो जानता है कि इसमें इंसानियत है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि ये इस शहर में ऐसी कोई चीज है जिंदगी में तेरे लिए जो तेरे को hope कहेगी. That's why the last line of the trailer says, I was wrong. There is a woman for you, worth all your tears. Now you're going to find out in life whether you're going to cry for the rest of your life or you're going to not cry for the rest of your life. If we look at this whole thing, right? Salam Bombay, Slumdog Millionaire, and this film. If I, as a film audience, binge watch these 3 films, and then think about the city called Mumbai. Just imagine, we are probably gonna think that sitting in China, probably gonna think that, oh my God, Mumbai is not a city of dream, it is a city of broken dreams. You understand what I'm trying to say? You're in for a surprise. If I just put this... You're in for a surprise. Sorry? The movie, you're in for a surprise. So when you see the movie, you will see a completely different ending. And that's really what makes this film very different from any of those other movies. You forgot to mention Gully Boy. Gully Boy is also like that. Somebody from a Gully Boy. Gully Boy, sorry, yeah. So yeah, all these movies,
kind of have in that similar world of coming from the poverty. But no, it's like I actually don't stick to that at all. I don't show poverty. I don't show all that stuff. I actually don't go anywhere near that. My approach to the But you know what they are doing is only because of poverty. What they are doing is Correct. not by choice, but because of the crisis that they're going through. correct. But imagine also something like, do you know where 60% of Mumbai lives? It's in the slum, right? So that's the reality of the city, and we can't know. deny that. We can't deny that. I mean, we are the lucky people, yeah. Correct. लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा दिखाओ. Like ठीक है यार, अच्छा तो दिखाएंगे, लेकिन अच्छे के साथ सच्चाई भी तो दिखानी चाहिए. सच्चाई में भी तो कुछ अच्छा है. ये मतलब नहीं है कि अगर वो पुअर हैं तो वो इंसानियत नहीं है उनमें वो लॉयल्टी, उनमें ऑनेस्टी नहीं है. That's the reason मेरे बचपन में ये कैरेक्टर है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, इसको ठीक करना है. चाहे मैं झोपड़पट्टी में रहूं, चाहे मैं किसी महल में रहूं, doesn't matter. लेकिन मैं हरामी नहीं बनना चाहता. That is really the spirit of my film. Subscribe now and press the bell icon.